approach is wrong or my, something is wrong. So then that's why I started looking up, as you say in the beginning of our course, motivational videos and, uh, you know, um, tried a lot of, nowadays what it's called manifestation and All law of right. attraction. Nothing Mhm. works. Nothing works. It is just your hard work at the end of the Mm. day. And then I think because of that, thanks to Google, which is now a smart search engine, I got your ad on Facebook because I was searching what is wrong, why am I not able to achieve a very high rank? I'm putting in this much of hours per day. Why am I have just moved 10,000 odd ranks when I was supposed to come in at least top 5,000. Mm. So yes, I'm so grateful that I came across your ad, and I think this course was tailor made for me because I could relate to so much, and I'm so grateful to you for making this course because I felt it was made for me. So tailor made it was. Thank you So very much really for attending thankful. the course. I am grateful Thank to you. you guys that you attended the course and uh, made me realize that I made a good course. Yes, it is really, it's amazing. And I feel like somewhere what all these points you have covered in 30 days, I had been applying it in some time in my life. Mm. Because throughout school, my mom, she used to, because see, my dad is an engineer, but we don't have like, he's working for someone else. We don't have our own businesses or, something where they'll say, you can go and join your father's business. And like, no. My Mm. mom was like, no, you people, my brother, he's elder to me. Both of y'all have to study and build your own lives and become Mm. something. So she used to help me a lot in studies during school, and she used to see to it that I'm always in the top. So also in 10th, and then yes, 11th and 12th, I shifted to CBSE from ICSE because those days it was like CBSE which was setting our entrance exams. Like the syllabus was very like easy if you do CBSE. Mm. So yeah, when I shifted to CBSE, that's when in the course what you say, if you enjoy studying, it makes a difference. So I did not like the ICSE curriculum. It was very, very stressful, I can say, too much of projects and hard work and such fat books to study. So then I enjoyed the CBSE syllabus 11th and 12th, and I actually loved studying. So then that time it was very easy for me. I the boards, the entrance exams and all. Yeah, so then that's how I could achieve something that time. But now we have 19 subjects for a 200 question MCQ paper. And yeah, I do Mm. not like all the subjects because sometimes some subjects are really very annoying. You have to just study it for the sake of the exam. Exam. So now I have made that change. I am starting to like studying those subjects to understand the concepts right from the grassroots level. And then I am Mm. seeing a really positive change now. For me now, those subjects are actually easier than the other ones which I liked. So Great. thanks to you for that also. Then another thing which I feel I have eliminated is comparing. And I think Okay. the conditioning audio has really helped me in that because last year, especially when I was doing my rural service, I so it is like a counseling where all the government quota students are put into different hospitals to work. So Mm. I was put in with some people from Bangalore Medical College and from Ramaiah and all that. And okay, there were I think 29 of us there, and all of us had that one target in my NEET PG. After the exam, I found out that some people had got 40,000 or 50,000 rank, and they are sitting in Delhi, in Safdarjung or in Bombay, in state GS. I'm like, how does they get in? I mean, I myself have not got a seat. And yes, that's when comparison came. They have quota, they have money to get into a private college or something like that. So that's when the comparison starts setting in. So I used to say, oh God, so see how he's so easy for him. He didn't even have to study. He has quota. He has.
But now I have made a conscious effort to stop that, because as you Hmm. say, we do not know what is going on behind the scenes. Exactly. What is we really don't know if they are having. So, like you say, not every person is like what they are on in front. There's a lot which goes on at home also. So, okay, maybe they have quota, good for them. So Yes. yeah, I stopped comparing or feeling inferior to them in any Hmm. way. My time Hmm. will also come. I am an unreserved candidate. I will feel proud the day I would get my dream branch, my dream college. एक So चीज मैं इसमें ऐड करता हूँ. यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी ना? yeah, yeah. बिकॉज यू हैव वॉच्ड माय कोर्स. सो एक चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. ये जब ये आपने एक चीज आपने सोचा कि उसकी जिंदगी में कुछ और हो सकता है, जो मुझे पता ना हो, जो मेरी जिंदगी में ठीक Hmm, हो, सेटल्ड हो. hmm, एक ये आपने अपने hmm, दिमाग में डाल लिया. hmm, इसके बाद एक स्टेप टू और होती है, जो मैं अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूँ. वो क्या है? आप अभी अपने जब प्रेजेंट के टाइम के बारे में सोच रहे हो कि यार अभी मैं रूरल एरिया में पोस्टेड हूँ, या फिर जो भी अगर कुछ hmm, खराब चल रहा हो, तो आपको अभी आपने जैसे बोला कि नहीं, आई ऑल्सो हैव अ गुड टाइम, मेरा भी एक टाइम आएगा. तो इस सिचुएशन में आप अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, उसको थोड़ा सा hmm, उसको भी थोड़ा सा वो कर रहे हो कि दिस इज अ बैड सिचुएशन. सो hmm, सेकंड स्टेप इज, अपनी जो बैड सिचुएशन है, उस बैड सिचुएशन में भी स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग गुड. yeah. तो जब भी कभी मैं और मेरी वाइफ दोनों, जब भी हमारे साथ में कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हम नहीं चाह रहे होते हैं, हमने कुछ और सोचा होता है और कुछ और हो रहा होता है हमारी लाइफ में जो कि हमें पसंद नहीं आ रहा होता, तो पहला थॉट हम दोनों के दिमाग में, हमने अपनी कंडीशनिंग ऐसी ऐसी कर ली है कि पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है कि यार इस टाइम में ऐसा क्या हो रहा होगा जो शायद मुझे एक्चुअल में फायदा देने वाला हो. इस टाइम में ऐसा क्या अच्छा है, ये मुझे ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी. और जब आप थोड़ा सा Hmm, एक्सप्लोरेटिव हो जाओगे ना इस मामले में, आपको मिल जाएंगी वो चीजें. थोड़ा सा जब हराइजन अपना बड़ा कर दोगे कि अच्छी चीजें क्या होती हैं, बुरी चीजें क्या होती हैं, और अच्छी चीजों में और भी चीजें इंक्लूड करोगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं पहली बार मैं जैसे इनकम टैक्स में हूँ, तो पहली बार जब मेरी पोस्टिंग हुई थी. हाँ, एक्साइज से आपको आपको बताता हूँ. जब मैं पहली बार सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर एज अ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्टेड हुआ था, मेरी 766 रैंक आई थी. मुझे चंडीगढ़ सेटल होना था. मुझे चंडीगढ़ और दिल्ली के अलावा इंडिया में कुछ भी स्टेट्स मिल सकती थी मेरी रैंक के हिसाब से, लेकिन मुझे चंडीगढ़ सेटल होना था. तो अब ये मेरे लिए बहुत बुरी सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा अब इस सिचुएशन में क्या बेटर हो सकता है. तो हमने क्या किया, हमने सिंस चंडीगढ़ मैं अगले साल एग्जाम दे ही रहा था, तो मुझे पता था कि अच्छी रैंक आ जाएगी तो मैं चंडीगढ़ वापस आ सकता हूँ, या फिर नॉर्थ इंडिया में तो वापस आ ही सकता हूँ. तो मैंने बेंगलोर जोन जो है काउंसलिंग में लिया, बेंगलोर जोन, क्योंकि मुझे कोई जोन जोन मिल रहा था. फिर मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की. सभी लोग बेंगलोर में सेटल हो रहे थे. बेंगलोर जोन मतलब कर्नाटका जोन. फिर मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की. मैंने बोला मुझे मैसूर चाहिए. मैसूर कोई नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने बोला मुझे मैसूर जाना है. मैं मैसूर गया. वहां मेरी वाइफ ने योगा सीखा. अब अब देखो कितनी लंबी कहानी है. मेरी वाइफ ने योगा सीखा. उस टाइम तक मेरी वाइफ बीएड या फिर जो नॉर्मल वो होते हैं, जिन पे लोग जा रहे होते हैं और आगे बहुत कंपटीशन होता है, कर नहीं पाते, इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं. hmm, तो उस टाइम तक उसकी वो थी, मतलब उसकी सिचुएशन कोई एम नहीं था, कुछ कर नहीं पा रही थी. उसके बाद जब उसने योगा सीखा तो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो. अब वो पंचकुला में एक बहुत बहुत अच्छी योगा टीचर है एक्चुअली. लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं उसे, अपना काम पसंद है. मतलब उसका जो पैशन था वो वहां से क्रिएट हुआ, मैसूर से, मेरी 766 रैंक से. सो सेकंड टाइम फिर जब मैं चंडीगढ़ में आया, मेरी 42 रैंक आ गई. अब चंडीगढ़ मिल गया मुझे. चंडीगढ़ में अब मैं कौन सी सीट पर जाऊंगा? तो चंडीगढ़ में मैं एक सीट पर गया. तो मेरी पहले पंचकुला पोस्टिंग हुई. चंडीगढ़ और पंचकुला एकदम पास में, और मैं पंचकुला में रहता था. तो मेरी चंडीगढ़ में पोस्टिंग नहीं हुई, लेकिन पंचकुला हुई. पंचकुला मेरे घर के एकदम पास था, तो मैं लंच टाइम पर घर भी आ जाता था, घर का खाना खाता था, गरम गरम खाना खाता था. फिर उन्होंने 6 महीने बाद मेरी चंडीगढ़ में पोस्टिंग कर दी. चंडीगढ़ में पोस्टिंग करके मैं सोच रहा था कि अब क्या अच्छा होगा बुरा होगा यहाँ पे. फिर मुझे पता चला चंडीगढ़ में पोस्टिंग होके मेरा रूम काफी बड़ा था, मतलब प्रॉपर जो इंस्पेक्टर वाली फील वाला रूम. मैंने कहा हाँ शायद यहाँ पर ये अच्छा है कि खुला खुला है सब कुछ. उसके बाद मेरी कहीं और पोस्टिंग हुई. अब उसमें मुझे एक छोटा सा रूम मिला हुआ है. उसमें मुझे बहुत छोटा लगता है, मुझे लगता है यार ये क्या, लेकिन उसमें फाइबर कनेक्शन है उस रूम में. तो इंटरनेट की 200 Mbps की स्पीड आती है, जिससे
ऑफिस में भी मैं कहीं ना कहीं ये काम कर लेता हूँ। तो ये सेकंड स्टेप भी आप इंक्लूड करना स्टार्ट कर दो। विद टाइम ये Yeah. आपकी थिंकिंग में एक पार्ट बन जाएगी, और अभी आपके सामने ज्यादा प्रूफ्स नहीं होंगे कि बुरी सिचुएशन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। धीरे धीरे आपके पास प्रूफ्स इकट्ठे होने लग जाएंगे। जैसे अभी रूरल एरिया में आप पोस्टेड हो सकता है 2-3 साल बाद आप देखोगे कि अच्छा, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में अभी ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एक बार जब आप ये देख लोगे ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, आपको चीजें बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि आपने प्रूफ देख लिया है कि नहीं, कुछ अच्छा होता है बुरी सिचुएशंस में भी। ये सेकंड स्टेप इसलिए जरूरी है। अभी हो सकता है आपके पास उतने प्रूफ्स नहीं है, रीजन उसका ये है कि क्योंकि अभी आपने उस एंगल से सोचा नहीं, कि एक्सप्लोरेटरी वाले एंगल से। तो ये एंगल और आप ऐड कर सकते हो। No, I agree with you. Like last year, actually, I left the rural posting. Uh, I took leave, like because our government has that thing. You can come back after PG and continue your bond. It is a 1 year bond. So I already worked 3.5 months. So I took leave because I didn't do well in the exam. And that time I used to be really negative, toxic, and हम्म। just seeing people on social media who would like put a photo of a college, my home for the next 3 years, my अच्छा। this thing for, yeah, my first day in PG. हम्म। So that used to be very, very demotivating, and I would always, consider myself topper to a dropper, because in MBBS I was always in the top 10 of the class, and my aggregate was 72%. Topper हम्म। was 75%. So I was saying I was such a good student throughout MBBS. What has happened to me in just 1 year of internship, that I have fallen so badly? And like some people who are just pass have got a rank or got a seat. So, but that was last year. I eliminated all that. I actually deactivated those accounts also, in हम्म। which I was following people. So then I just made a fake account for just updates on the exam, because everything's online now. So suddenly they will put, okay, uh, for the AIMS exam, this day to this date is your registration. This date is your paying the fees. So you have to keep up to date with those announcements. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So for that, I just made a fake account where I just follow those exam pages which tell us. So in that हम्म। way, that was my sort of digital detox. The less I see, the better. If I don't see people, um, I would not feel bad, because that they are sharing their happiness. But then that 10 seconds, you are thinking the whole day, I am inferior to such a person. I am not good enough. हम्म। And you end up not studying. So I think even in the course, the digital detox, which section you took up, that was a हम्म। very different perspective, which I hadn't thought of eliminating notifications of apps, WhatsApp, and all, uninstalling. So ओके। I incorporated that also. It was really helpful to me now, because actually most of our studies is on phones or iPads, because the apps for the preparation are on they're smartphone apps, so they do not have a laptop version. They claim people are pirating the stuff, हम्म। so no laptop version. So I have to use the phone to study. हम्म। So yes, that was very helpful uh, to remove those unnecessary notifications and apps. And हम्म। this thing I had already incorporated. I don't want to see what people are doing, because it's very distracting. एग्जैक्टली। Someone is putting one photo, emergency. Oh, I have night duty today. Oh, I have OT today. I am. I did so many hours of duty, and I'm saying, okay, I'm sitting at home. I'm not even like started हम्म। my PG. So that was disappointing. But now I have stopped that, because it's not my fault. Because last year एग्जैक्टली। suddenly they brought down the notification. Initially it was 50% reservation and 50% for unreserved. Last year they changed the whole thing. The government, they made it now 64.5% reservation. They put in हम्म। EWS, they put in SC, ST, OBC, everything. So it's all in all 65% reservation now, and I fall into that unreserved quota. So
that's where I feel the whole problem. So it's not my fault. I mean, if I knew it before, then I would have prepared much better, but it just suddenly came. So, I have to do PG. There's no other way. I cannot remain just an MBBS. So this is just part and parcel. I took it positively. Now I can say I'm in a much better zone. चलो, बहुत ही अच्छा है यार, काफी अच्छा लगा ये सब सुन के कि व्यूअर, मतलब आपने क्लियरली बताया कि पहले एग्जैक्टली ये चीजें चल रही थी, अब ये चीजें हट गई हैं. Hmm. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर द चेंज यू आर ब्रिंगिंग इन योर लाइफ. और इसके अलावा जैसे कंपैरिजन का आपने बताया, और दूसरा आपने बताया था लविंग द प्रोसेस. इसके अलावा आपने किसी और वीडियो से पर्टिकुलरली कनेक्ट किया? Oh yes, perfectionism. Oh God, I was a real perfectionist. And I didn't realize it till you highlighted it in the videos. ऑलराइट. I was a big, I think after COVID, because in the lockdown, most of the housework I used to help mom. I was a big fan of cleanliness and clearing my table, and only my table is clean will I be studying, piling my books first in this order, then this order. And then after you highlighted, I realized I have wasted so much time just cleaning my table एंड एनर्जी. and energy, and I get tired. So हाँ. now I have completely stopped that. I have actually removed everything on my table. It's just plain so that I bring my book from my cupboard, sit and study. No more of that. And also, I wanted a quiet surrounding. Um, so I used to keep telling at home, don't make noise, I need to study, don't make noise. ये देखो, Then, ये so इसमें एक then कंघी भी लगी हुई I after the audio which you play, that you just observe the sound as a third person on a है. screen, and you eliminate that thought from your brain. And I really realized that why couldn't I do this before? It would have made such a difference. So really grateful for that. And one more thing which I used to do as a perfectionist was to keep jumping sources, because every time an exam finishes, I think these coaching classes, I don't know what they do. I don't know how the topper is going to 4 or 5 coaching classes at the same time. So they will say, I did my thing from here, and I read my notes from here, and I did this question bank, and I did those videos. So it just kept me trying out those new sources instead of just sticking to one source. So I have now found one source, and I'm just sticking to it, and it's seeing I'm saving so much of time and perfecting that one source. So um, that was also something which I used to do, just jumping too many sources and wasting time, and then मतलब I जैसे think I'm पहले not एक बुक getting पढ़ रहे हो, any. पहले एक बुक पढ़ रहे हो, Hmm, और पढ़ते पढ़ते पहले अच्छा लगता है काफी पढ़ने में एक्साइटमेंट के साथ में, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसमें कोई चीज ऐसी आ hmm, जाती है कि ऐसा लगता है कि यार ये सोर्स hmm. ठीक नहीं है, अब वो वन And परसेंट भी क्यों ना हो. we have 19 subjects. So okay, I did this subject from here, I did this subject from there. This sir's notes are good. This sir's, at the end of the day, anatomy is anatomy only. Your body cannot change. So I realized हम्म. that there's no perfect source. In fact, it's just us. We have to study and we have to perfect that syllabus. If we एग्जैक्टली. cannot perfect it, no one else can do it in the exam. We are going and giving the exam, not those professors. They have to finish. So I have stopped that. And in fact, I have actually sourced some books. Like nowadays, this app revolution has come where everything is online on the apps. The question bank is online, the videos are online. And हम्म. I felt that was very demotivating for me, because when you get a question wrong, they will say, oh, 55% got it correct, 80% got it correct. You are the ओके. 30% who got it wrong. So I would feel so demotivated. Oh, I'm so dumb. I did not get this question correct when 80% have got it correct. So I realized, oh, when I did my CET in 2015, I was using books, and हम्म. if I got it wrong, I was just putting that highlight, that tag that I have to check this question again. हम्म. No one told me 30% got it correct. You are or 50% got it correct. You are so dumb. So I have sourced some books.
which may be 2-3 years old editions. Before that time apps were not there. But I am happy doing a physical question bank with a pencil and paper because that was really demotivating. That and I was एक्चुअली वो आपकी running my प्रॉब्लम नहीं video. थी, आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, वो ऐप की प्रॉब्लम थी। जैसे आपने देखा होगा गेमिंग एप्स में कभी ऐसा नहीं होता, जो मैंने आपको डे 5 पर बताया था। वो इतनी एडिक्टिव इसलिए होती हैं क्योंकि गेमिंग ऐप में आप हमेशा ही इंकरेज हो रहे होते, कभी भी डिस्करेज नहीं होते। अब इस ऐप में ये चीज गलत थी, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के डाला, लेकिन उन्होंने गलत डाल दिया कि बंदा डिस्करेज हो रहा है, इसकी वजह से आप छोड़ दोगे, तो अल्टीमेटली आप उनकी ऐप कम यूज कर रहे हो। In fact, most of the people who write the exam, they are saying the same thing, that I have stopped doing tests. I have stopped doing question banks for the simple reason that I am getting demotivated. I am scared of attempting questions, and I am a part of that group also. I was ओके। scared that I cannot do this question हाँ। bank, or I cannot do these tests because I will feel so bad that I have got like 10,000 people are better than me or 20,000 people are better than me. So, but now, as you say, to stop the last few days, what you were telling about the domino effect and the हम्म। compound effect, I thought it's okay. Today it may be wrong. At least it's wrong today. I will learn from that and perfect an answer, and tomorrow I will be correct. So the curve will keep on rising. Someday or the other, I will be perfect. So then I started incorporating that and have been more regular in doing tests, like daily tests, subject wise tests, हम्म। to assess myself. It's okay if it's wrong. But initially, it was very, very disheartening that I have got everything wrong. And this much percentage of people are better than me. 20,000 attempted this module. Out of that, you are 15,000 position. It was very, very हम्म। disheartening. But now I हम्म। strongly believe in what you say. Domino effect, compound effect. It is going to reap rewards someday. If not हम्म। today, 1 month from now, 2 months from now. So एग्जैक्टली। thanks. एग्जैक्टली। वाओ। So you are actually getting benefited from, you are connecting to each and every video, I can see. So जो हम कभी कभी टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं, और कभी कभी टॉपर्स आपको, कोई कोई टॉपर्स होते हैं जो बोल देते हैं कि एंजॉय द प्रोसेस, जर्नी को एंजॉय करो। तो उस टाइम पे जब मैं तैयारी करता था, तो उस टाइम पे मैंने एक दो बार किसी के मुंह से सुना हुआ था। मुझे शुरू शुरू में समझ में ही नहीं आ रहा था कि जर्नी को एंजॉय करने का मतलब क्या। और अब आप देख सकते हो कि जर्नी को एंजॉय करने के पीछे इतनी बड़ी कहानी है, जो हमें बिट बाय बिट, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप सीखनी पड़ेगी अपने दिमाग में डालने के लिए। तो और वो जब बोलते हैं एंजॉय द प्रोसेस, उनके पीछे ही वो कहानी पहले से बचपन से अपने आप बन चुकी होती है। The way they portray it, or whether the coaching classes make the topics say all that. As you say, I study 10 hours a day. I sleep for only 4 hours. So I myself also was starting to believe that, oh, a topper is so perfect. He only sleeps for 4 hours. He's only studying. He doesn't have bad days. He has, he's so smart. But then after listening to you also, it started registering in my head much more strongly that nobody is perfect. We all have good days, we all have bad days, and we are all individuals. What may work for him may not work for me. यस। I may need 6 hours a day of sleep, I may need 8 hours a day of sleep, but my mind is fresh then. And then those 10 hours a day remaining, what I can study, I will study even better than the topper. But if I'm going to sleep only 4 hours thinking that a topper sleeps only 4 hours and then sleep the whole day after that, sleepy, drowsy, cannot concentrate, then the days are just passing without achieving anything. And then the exam just comes out then without being prepared. So that's something also which I really registered in after you said it, because I had a topper from my own class in last year's AIMS exam. He got rank 5, and the way they portrayed his video on YouTube, that, oh God, he is so focused and so perfect, like the perfect student. It's not like that. It's definitely not like that. I don't know what the coaching classes do, whether they make the toppers say all that,
but it's definitely not like that. Hmm. So I wish everyone listens to how you had said it, that you have to just, you are an individual, you are unique, and you have to create your own path. And Exactly. you know what's best for yourself. No topper can tell you, no coaching class can tell you. So I think everyone should incorporate that. And I have seen changes in myself. I know how many hours of sleep I need. I know how much of time I need in a day to study. I may just study 6 hours a day, but those are very productive 6 hours. Hmm. So that point which you highlighted was very it's very important, and I think relevant for today's generation who was all preparing for exams. यस। तो अब होता क्या है कि सपोज सोचो जरा कि अगर मैंने जैसे किसी एग्जाम में टॉप किया है, जैसे एसएससी सीजीएल में टॉप किया, अब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे बुलाता है या फिर यूट्यूब पे मेरा कोई बढ़िया इंटरव्यू होता है, तो आ, और मुझे पता नहीं है कि ये पीछे की कहानी जो मैंने आप लोगों को 30 डेज डीप चेंज चैलेंज में बताई, वर्कशॉप में बताई, मुझे ये कहानी पता नहीं, मतलब कि क्या किस वजह से मैं एक्चुअल में पढ़ाई कर पाया। तो अब जब मैं 42 रैंक लाऊंगा तो मुझे ऐसा तो लगेगा हाँ मैंने मेहनत तो की है, क्योंकि मैंने मेहनत की है, ठीक है, लेकिन मेहनत कैसे की है, यहां तक मैं कैसे पहुंच पाया हूँ, बाकी लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, मतलब उस एंगल से मैंने कभी अपनी जर्नी जी नहीं थी। तो होगा क्या, जब कोई मुझे बुलाएगा तो फिर मैं क्या बोलूंगा वहां जाके, मेरे पास क्या ऑप्शन है। अब वो कोचिंग वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं, ठीक है, मोटिवेशन का मतलब चार्ज अप कर देना, मेरा बस एम यही रहेगा। दूसरा, अब मुझे पता होगा कि बहुत सारी बार ऐसा हुआ था जब मैंने ही पढ़ाई नहीं की थी, तो मैं इस बात को कैसे कैसे बोलूंगा उन लोगों को। मैं बोलूंगा यार बहुत टाइम ऐसा था कि जब मेरी जिंदगी में भी लो था, लेकिन मैंने फिर करके दिखाया। लेकिन ऐसे टाइम पर भी तुम्हें आगे बढ़ना होता है, सभी के साथ में होता है। अब देखो मैं कैसे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह साउंड कर रहा हूँ, सभी के साथ में ऐसा होता है, लेकिन वही मोमेंट्स होते हैं जब तुम्हें सोचना होता है, अपने माँ बाप का चेहरा अपने दिमाग में लाओ, सोचो हम्म, कि जब तुम कलेक्टर बन जाओगे तो फिर क्या क्या नहीं कर सकते, जीरो से हीरो बन जाओगे। हम्म, करना पड़ता है, मैंने किया, तुम भी करो, हम्म, समझ रहे हो ना। अब इस पूरी प्रोसेस में प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों के दिमाग में रजिस्टर होता जा रहा है कि करना पड़ता है। हम्म, अब हम्म, उनके पास एक ही सॉल्यूशन है कि जब पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, जब लो आ रहा हो, तो करो, करना पड़ेगा। अब वो अपने आप को सोचते हैं क्या करूं क्या करूं, तो एक आध मोटिवेशन हम्म, वीडियो देख ले, चार्ज अप हो गया, फिर करने लग गए। हम्म, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है प्रॉब्लम का। हम और फिर 2-3 दिन बाद तो ये काम करेगा नहीं। 2-3 दिन बाद क्या होगा, अब वो सोचेगा हम्म, कि वो जो टॉपर था वो एक्चुअल में कर पा रहा था और मैं नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं आई हम्म, एम इंफीरियर टू देम, दे आर बेटर देन, हम्म, है ना। और फिर अब वो गिल्ट और वो सारी चीजें, जबकि yes, रियलिटी ये है कि वो टॉपर ने एक पूरी जिंदगी जी है, और उस जिंदगी की वजह से उसके दिमाग में कुछ बिलीव्स डले हुए हैं, और जिन बिलीव्स के ऊपर वो उसकी पूरी तैयारी टिकी हुई थी, जिसकी वजह से वो पढ़ाई कर पाया था। अगर लो आता है और उसमें भी वो पढ़ाई कर पा रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा बिलीफ पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहा हम्म, है, जो इसके दिमाग में नहीं, जो इसको डेवलप करना है। तो ये पूरी प्रोसेस है लंबी। तो दिस that इज is एक्चुअली। something which everyone needs to know. And I myself have been in that position where I feel I am so inferior. And then, as you say, only negative thoughts start coming. I am a failure. I overslept, so I did not. I got a break, so I am a failure. I so there's a lot which is. I think that's why the course is called Deep Changes. We are rewiring our brain, and यस। I think everyone needs to know that, because what we see on YouTube in the toppers videos is nothing. That is not even 1% of them. There's a lot which goes on behind, and um, I think everyone should be a part. At least students, I would say, if this course could be introduced in school itself, because a lot of behavioral patterns are developing in school, यस। and that's why there's just one a group of toppers in the school. Everyone else is just that just pass category. Especially in my ICSE school, it was like that. Very few could perform very well. So, and then that's what they no one understands this pattern of thinking.
and I wish everyone does one day. And even like for instance, last week I was really sick. I didn't test myself, but I don't know if it was COVID. I did not test myself. Um, like body pain and cold, cough, throat pain. But I still made it a point to read as the challenge every day, 1.5 hours to read. And Hmm. I was actually, thinking that yes, this course has brought around that regularity in me. That yes, I Hmm. will read for 1.5 hours every day, whether I'm sick, whether I'm like sleeping, body pain, throat pain. But I did read for 1.5 hours. And then, as you say, those wins I am collecting in my basket. So at the end of Yes. the day, I am rewarding my brain. Yes, you Hmm. were sick. You still completed your mini challenge. 1.5 hours you read, so very congrats. And then those happy hormones, when you feel them, you are motivated to read more and more. You'll get So, addicted to these feelings later hmm, on. so that is something also which I have learned from the challenge of regularity. So 1.5 is the minimum. Right now, I can say I'm easily reading up to 6 hours a day. The AIMS exam is which I would be appearing for is in November 13th. So I'm hoping I can achieve something in that. Because NEET PG, though I did get 9,000 rank, I am waiting for the counseling. It is postponed. I don't know. Hmm. The government is doing something. It will happen simultaneously. So I'm thinking, why not? If I can achieve in AIMS, that this exam is for four colleges: AIMS, PGI, JIPMER, and NIMHANS, Bangalore. So if I Hmm. can achieve in those institutions, why not? It is like dream to study in AIMS or PGI or JIPMER. I hope to Definitely. do, All the best. All and the best for those and exams. I wish if I could achieve it, and I could just like ping you and see like, yes, you have really mentored me so well that I could Hmm. achieve it. I'll be waiting for And that day. yes, अगर but we'll not expect certain मान के नहीं yes, चलेंगे no, because I no, think this no, is going no, to no happen. This is going long-term to happen. goals, no No long long-term term goals, no focus, long long-term term goals. focus. Yes. Yes, No, we can have long term goals, but not too much I focused on think them. Yes. that should remain in our head, but we need to keep our mini challenges every day, like you call Hmm. them, That instead should of remain in thinking. our head so that we our direction is all right every time. Yes, we are not wavering of it. Yes, Hmm. and that is also something that I learned from the course. Not to simply think today I will finish 100 pages, or today I will do this, and then you will not achieve even 50% of that, and then feel so guilty. Oh God, today I planned I will do this, but see, I'm not doing. I am a waste. I'm a loser. I'm a failure. Those Hmm. negative patterns had developed in me, but now I do not keep those kind of goals. Um, so again, grateful to you for that point also. It has Thank you very really much. brought about a change. Thank you very much for bringing change in yourselves through my course. So as you said, K, and this should be a part of our school system. So actually, that is my vision. और अभी जैसे इट्स फोकस्ड ऑन स्टडीज के पढ़ाई में मन कैसे लगाएं उसके अराउंड जो बिलीफ ब्लॉक्स हैं वैसे तो बिलीफ ब्लॉक्स वो कॉमन बिलीफ ब्लॉक्स हैं दूसरे टारगेट्स में भी सेम ही होते हैं लेकिन मेरा जो विजन ये है कि हमारे स्कूल सिस्टम में स्पेशली 6 से लेके 8 तक के बच्चे या फिर मतलब मिनिमम 6 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एक ऑप्शन हो स्कूल में मोस्ट प्रॉब्ली स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल के टीचर्स या फिर स्कूल के वो सब कराने लग जाए बट एक पैरेलली एक ऐसा सिस्टम हो द थिंकिंग मशीन्स का या फिर कोई भी जिसमें टीचर्स के दिमाग में सॉरी जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक थॉट आए जब भी वो बच्चे को एडमिशन कराएं कि जब ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इसको स्कूल सिस्टम तो चल ही रहा है क्योंकि अभी वो पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है स्कूल सिस्टम चल रहा है एक स्कूल में करेंगे और साथ में दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन द थिंकिंग मशीन्स या फिर कोई और अगर ऐसा कुछ करता है तो वील गेट हिम एडमिटेड इन दैट टू उसका उसमें भी एडमिशन करवा देंगे तो काइंड ऑफ एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम माइंड ट्रेनिंग का दिस इज माय विजन अगर किसी पेरेंट के दिमाग में
ये थॉट आने लग जाए इन फ्यूचर, देन मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया। एंड इट विल नॉट बी फोकस्ड ऑन स्टडीज ओनली, इट विल बी कोई भी किसी भी चीज में रेगुलर होने के लिए जिसमें भी आप पैशनेट हो। जैसे अभी आपके और मेरे साथ में क्या है कि हमारी जनरेशन के साथ में कि हम अपना जो पैशन है वो इतना एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए थे स्कूल टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पर वो सब चीजें नहीं थी। सो वी सम हाउ गॉट इनटू दिस जर्नी ऑफ स्टडीज। बट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव ऑप्शन, वो अपने पैशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उस फील्ड में जा सकते हैं। और उस फील्ड में जो बिलीफ ब्लॉक्स हैं उनके, उनको रिमूव करने के लिए देयर कैन बी अ कोर्स और एक जर्नी हो सकती है जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो। जैसे अभी आपने ऐप के बारे में बात की, जिस ऐप में आप कर रहे थे, मॉक टेस्ट दिया, अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर कि 80% आर अबव यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ आया। बट माय 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 विजन इज के हमारी जो ऐप हो वो इस तरह की हो कि जब एक गेमिफिकेशन ऐसा लगे जैसे कोई गेम खेल रहा है। जैसे जनरली जो गेम्स में होता है, जैसे सबवे सर्फर्स में है कि जब आप एक वीडियो देखते हो तो एक वीडियो के बाद में पूरा आप जब देख लेते हो तो पहली आपकी एक विन की तरह वो रजिस्टर हो, या फिर जब आधा आप वीडियो देख लो तो एक बीच में कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप का कुछ हो, और आपका स्कोर भी बढ़ता रहे, और बीच बीच में आपको मैसेज भी आते रहे कि आप अच्छा कर रहे हो या फिर जैसा भी है। सो उस टाइप की गेमिफिकेशन भी हो ऐप में। सो दिस इज माय विजन एंड आई एम नॉट टू फोकस्ड ऑन दिस। हाँ, एक वो डायरेक्शन दे रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे ना, यहाँ से मुझे याद आया कि वो विजन है, वो एक डायरेक्शन के लिए है कि मुझे डिसीजंस कौन कौन से लेने हैं। अभी जैसे 30 डेज चैलेंज चल रहा है, अगर उसमें मुझे कुछ और ऐड करना है तो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ कि मेरे विजन के अलाइंड हो। लेकिन मैं बार बार ये नहीं सोचूंगा कि अरे यार वो तो पता नहीं कितने टाइम बाद होगा, वो कब होगा कब होगा कब होगा, इस वजह से मैं आज की प्रोसेस एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम एंजॉइंग टुडे दिस मोमेंट कि आप मुझसे बात कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। सो आई एम एंजॉइंग दिस मोमेंट ओनली। सो दिस इज हाउ actually we move forward. Yes, and I think in the today's generation it's very valid because there are a lot of artificial standards by social media. So I see young children are going into depression. I mean, we have had cases in our hospital also when I was an intern. Young Hmm. cases going, young children going into depression because of fake social media standards. So I think this is very valid for them to avoid comparing themselves with their peer group and to focus on themselves and make themselves better human beings. Because when they come out into the society, they have to bring a change. So we cannot have a depressed group of Yes. children passing out of school. Um, Yes. I think it's very relevant in today's time. I feel I wish we could go back to our time when we didn't have phones, we didn't have Hmm. Instagram and Facebook. I mean, Facebook was there, but not. It was not that much like today how it is. Hmm. Hmm. Lot of fake standards. And people don't realize that what you are seeing is just a photo or a video. There's a lot which may be happening in that person's life, Hmm. and we do not know what is going on in their life. So I think children today would really benefit from this course if it was introduced to them. Hmm. Especially, I feel your mind conditioning audios, those are gold, like literally gold. They are so powerful. They're just 2 minutes, but they're so powerful. And I really benefited from them. So the children should just listen to those, I feel, and there would be so much change in themselves. So I hope you can do that for the We'll generation do it. because We'll do it. हम अपनी ऐप को इतना गेमिफाई कर देंगे, आई डोंट नो कब होगा वो, लेकिन दैट्स अ विजन, विल डू इट। हम अपनी ऐप को इतना गेमिफाई कर देंगे कि इंस्टाग्राम रील की तरह ही वो इतना they'll have so much fun in that and they'll learn. So anything else you want to ask? कोई डाउट आपका या फिर कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग एल्स? Hmm, not really, but I could just express gratitude to you for this course. I am really grateful थैंक यू to यार. make this because as you say, I have learned so much from every aspect of the course right from day one. And that's what I told you. I felt it was like I felt this was made for me. Like every aspect of it was so helpful. I can say I wasted a lot of time on motivational videos, on
law of attraction, manifestation, as people nowadays call it. That is all waste of time. And nowadays it's really in the news, no? This one, someone says on the show, "This is my manifestation couch. This is you manifest your life partner, you manifest your job." There's nothing like that. Everything in life is just hard work and Hmm. your own belief system. Everything automatically manifests. And this is something which I have learned through this course and in my past years of my life when I was achieving a lot. It's just hard work. If you Hmm. put in hard work, automatically your manifestation happens. You attract success. Hmm. So like they say, no, jaise karni waisi bharni. So you do your work and automatically everything, all success is yours. But thought beliefs, a system, like I needed fine tuning or rewiring, and I got that through this course because I had lost direction. If you could see failures in the entrance exams, I can't call them Hmm. failures, I can see the stepping stones to my future success. Perfect. Comparisons, and basically, yeah, I had lost direction. So I'm Hmm. grateful to you and I'm grateful to that ad which I got on Facebook because the minute I saw it, I think it was something about saying study, something like that. And then Yes, I yes. saw this sir has got a rank in an exam and I want to get a double digit rank or even a Hmm. single digit rank in the Hmm. exam because the branches which I would want to specialize in and the dream colleges I look forward to, they require that rank. With my current 9,000 rank, I will get a seat. I'm not saying I won't, but it'll be in a private college. But I think in Hmm. medicine, if you study in a government college, it makes more difference when you come Hmm. out as a specialist than studying in a private college. So I wanted to achieve that. So I have so much to achieve. And those motivational videos and all that is waste. I needed someone who has achieved something in an exam to teach me those tips and tricks. And I guess I landed up in the right place because that Hmm. is exactly what I was looking for. So really, really thankful to you. I really am thankful to you. आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया। एक एक स्टेप जो मैंने आपको बताई थी उसको अपने बिहेवियर में आपने अप्लाई करने की कोशिश की एंड यू एक्चुअली सॉ द चेंजेस। सो इट वाज लाइक अ हैंड होल्डिंग काइंड ऑफ कोर्स के हाँ मेरे साथ में ऐसा हुआ था, इस टाइम पर आपके दिमाग में ये आएगा, इस टाइम पर आपके दिमाग में ये आएगा Hmm. और ये गलत है, ये गलत क्यों Hmm. है, ये इसके पीछे इतना बड़ा रीजन है। सो इट वाज Hmm. लाइक दैट। All right. Thank you very much, Yaar. It was nice talking to you. Should I put this Thank video you. on YouTube? I don't mind. Like, I hope someone can get inspired from my story. That yes, even a doctor needs rewiring sometimes. All right. So I don't mind. Okay. I- I'll be grateful if someone can learn something from my experience and from the thinking machine. So no problem. Sure. So thank you very much. I Thank you, sir. hope आप इसी तरह से अभी आपने एक डायरेक्शन एकदम सही लिया। चीजें कभी कभी खराब भी जाएंगी आपकी लाइफ में, कभी अच्छी भी होंगी, लेकिन डायरेक्शन इज करेक्ट। ऑल राइट। सो हमेशा याद रखना कि आप डायरेक्शन सही है, लेकिन होता है ना कि हमें पता है कि यहाँ से चंडीगढ़ दिल्ली जाना है, ये रास्ता है, लेकिन बीच में हम थकते भी हैं, बीच में हम कुछ भी होता है। उसकी वजह से कभी ये मत सोचना कि यार दिस इज नॉट वर्किंग। ऑल राइट। सो Yes. कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन, कभी स्लो हो गए, कभी फास्ट हो गए, बट ऑलवेज रिमेंबर कंपाउंड इफेक्ट। अभी तो आपने इस टाइप की Mm, जर्नी स्टार्ट ही की है, अभी तो पूरी लाइफ mm, आपकी पड़ी है। अभी तो ठीक है mm, एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में आपने और भी बहुत सारे काम करने हैं और उन सारे कामों में एग्जैक्टली सेम चीजें यूज होंगी, सेम mm. थॉट प्रोसेस, सेम माइंडसेट यूज होगा। कीप मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यू लव व्हाट इज अबाउट टू कम इन योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते Thank you हैं। so much. डू लेट मी नो व्हेन Yes, यू yes, गेट सिलेक्टेड एंड इफ नॉट गेट yes. सिलेक्टेड। सो बोथ आर And ग्रेट। thank you so much. Thank you. Thank you very much. See you, Aditya. Bye bye. Thank you. Bye.